अगर आप अपने पेड़ को जरूरत से ज्यादा पानी एक दिन में दे दोगे तो वो जल्दी बड़ा नहीं हो जाएगा. बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट अबाउट वाटरिंग योर प्लांट एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई स्टेप एट अ टाइम वाला जो था वो एटीट्यूड था उस टाइम पे कि हाँ यार मतलब अभी हम वी कैन नॉट फिगर थिंग्स आउट, वी डोंट नो हाउ आर वी गोइंग टू जनरेट रेवेन्यू. तो जो चीज़ समझ आ रही है वो करते हैं. और अनफॉर्चुनेट इट इज बट जो दिखता है वो दिखता है. और जब आप अपनी प्राइसिंग की वैल्यू करने लगते हो, ठीक है, आई थिंक दुनिया भी करने लगती है. कि मैं पर्सनली अमृतम के सोशल मीडिया पोस्ट की बहुत बड़ी फैन हूँ. अमृतम पेज को मैं बहुत टाइम से फॉलो करती हूँ और जो सोशल मीडिया कंटेंट वो पोस्ट करता है दैट इज समथिंग मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. सो आप हमारी ऑडियंस को सोशल मीडिया मार्केटिंग पे कोई 3 टिप्स या गाइडेंस देना पसंद करेंगे? स्तुति, because स्तुति handles it. So I think the first important thing is to see how you can add value to the people who are following you. If it is like the way when we started our Instagram page, so I think just a couple of days ago I shared a story where 3 years ago we were about to hit 10,000 followers and now we are very close to 80K. And it's purely because we are not the brand who keeps posting about our products all the time. Like it's not just product photos, offers, offers. With every post, we are trying to see, okay, how can we educate, entertain, or just, add meaning to the person who's watching our post. And that has made a big difference because sometimes some of our posts have been shared like over 10,000 times, and all of it has been an organic growth. And essentially, 2 tips, to break it down. One is to be consistent. No matter what you post, just post regularly, if not every day, at least regularly, because that builds a relationship with the audience who's following you. At the end, though behind those numbers, there are human beings, who are the people who are consuming the information that you're sharing, are people, real people. So you have to think of them as that you're communicating. And for that, you have to be consistent. Just like how you keep in touch with a friend or a family member. It has to be treated like that. You are constantly in touch. And for that, you have to show up consistently. And second thing is that see how you're not sharing what you want to share, but you're sharing what the other person would have any takeaway from. Like if you go through our Amritam's Instagram, we are constantly trying to share on our stories a lot of information, on our posts a lot of educational content, entertaining content as well, and current affairs which are relevant to our brand. And unlike other brands, sometimes we also like to have an opinion about a certain thing. And I feel that audience appreciates that more often than not. I remember this time when we did this campaign with a male model, and we did the shoot, uh, and we got a lot of criticism on one of our posts, and a lot of people put, that is the only time we received a lot of hatred from our audience. But we did not delete the post, we kept the post, and then we made another post right after that which said art is subjective. And then we should experience so much love because there was so much hatred on that post. They poured so much love to us, saying that we are glad that you stood up for yourself and for the photographer, for the male model, for what you believed in. And like, to an extent that people came up and said that as a society we are completely okay with women being sexualized,
But the minute a man is sexualized, and we are very uncomfortable. And this was all happening, like people are talking amongst each other on the comment section, and we did not have to say anything. And we realized that we have created such a powerful community who's going to stand up for us. We don't always have to fight our battle alone. Sometimes we just have to choose to be quiet and carry on with what we are doing, and people will just support us when needed. And I think social media, at the end of the day, there is no like logic or hack or book. It's just, if you have 100 followers, treat those 100 followers as 100 people who have come to your house. And imagine, can you host 100 people? Before you, before you have an ambition for 10K followers, 1 lakh, 1 million, 10 million, this, that, right? Like, and when you start communicating them with that viewpoint, even those 100 customers or 100 followers would make a huge difference in your initial journey, which I think a lot of people give up at a very initial stage because they're not seeing the kind of growth that someone else achieved maybe in 6 months. But Yeah. we also do not account for the fact that maybe in 6 months they grew their account to that level. But what about the years that they gave to learning before they came and shared it on a social media platform, you know? So it's like that. Like for us, in a factory, I'd be roaming around, and Papa will be like, "Oh, do you know which herb this is? And this is what it does." And he'll randomly say, and I'm like, "Wait, let me just shoot this for everyone." And we do not plan it. We just like, okay, okay, now. He doesn't even need like a script कि इसमें क्या क्या है, अब मैं इसके बाद ये बोलूंगा. So Yeah. he has 30 plus years of experience. So Yeah. if he stands up there and talks for 2 minutes, it's literally nothing. I have to tell him that, okay, I want my reel to be 30 seconds, but he'll be like, there is so much that this herb does. How can I shorten it up? You know? Uh, so it's like that 30 plus years of his learning and reading books now shows up as कि हाँ 50,000 व्यूज हो गए. बट वो उतना टाइम गया है उनकी उस लर्निंग में. तो for anyone, for whoever watches this show, I would say that invest, like input भी उतना ही होना चाहिए जितना आपका output है. इनफैक्ट इनपुट कई ज्यादा होना चाहिए. When you're sharing X, your learning should be at least 10x. Yeah. And then why would people not follow you if you're sharing or adding value to their life? True, very true. And Amrutam page is full of value. मतलब उसमें इतनी सारी स्टोरीज होती है. कोई भी पोस्ट ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट पेज पे प्रोडक्ट है, पहले कम से कम 5-6 इस पे इंफॉर्मेशन हो गया, एंड उसके लास्ट में प्रोडक्ट का हमेशा एडवर्टाइजमेंट रहता है. एंड आपने कहा एंटरटेनिंग, तो इसमें पीकॉक के वीडियोस, अमृतम वाटिका के बारे में, इट इज full of means knowledge, information, and it's all about community. Amrutam page is so much to learn from. अमृतम के आज 1000 SKUs है, बट इनिशियली आपने कितने प्रोडक्ट से स्टार्ट किया और उसे कैसे बढ़ाते गए? Okay, so 1000 SKUs are our formulations that have been approved and licensed by Ministry of Ayush. As of now, we have about 140 SKUs on our website. We started with about 10 products, and 10 of them were malts. And then slowly we started introducing personal care. Like personal care, maybe pehle hair care aaya, then body washes aaye, then we introduced a lot of skin products. But even today, the core will always be wellness and healthcare. And even when we offer a hair care product to someone, at the core, it's still a healthcare product because of the ingredients used in it. Um, like, since our father is the brain behind all of these product formulations, all we have to do is ignite some inspiration in him and tell him that, okay, we want maybe like something like this, and it can be used like this. This is how it will work. And then he would like spend months
just trying to experiment on different products, and we become like his guinea pigs, and we'll use these products on ourselves, and then eventually launch it when you're 100% sure that okay, it works on a product level, it works on a formulation level, it works on the production, packaging, you know, and the whole communication, all of that put together is when we launch a product. But since he is very passionate, he has formulated so many products that have been licensed, which are 1,000 plus. ओके। आपकी जो जर्नी रही है उसमें पैंडेमिक ने बहुत बूस्ट दिया है। मैंने आपके कुछ इंटरव्यू से पढ़ा था कि आपने पैंडेमिक के वक्त 8 to 10 टाइम्स एडवर्टाइजमेंट्स को बढ़ाया था फर्स्ट वेव के दौरान, और कंपनी ने 250% ग्रोथ किया था। तो पैंडेमिक के वक्त अमृतम की जर्नी कैसी रही? तो आई थिंक हाँ, मतलब पैंडेमिक एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टाइम था हमारे लिए, क्योंकि आई नो मतलब बहुत सारे बिजनेसेस बंद भी हुए, बहुत लोगों का नुकसान भी हुआ। और तब शुरू में जब पैंडेमिक हिट किया तो शायद हम भी उसी ही जगह पे थे जहां हमें लग रहा था कि अब हम डे टू डे क्या करें, क्योंकि सब कुछ बंद है। अगर लोग वेबसाइट पे आ भी रहे हैं तो वो ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं, और अदरवाइज भी बहुत नुकसान हो ही रहा था एज यू नो ऑफ ट्रेड फॉर द पीपल। ठीक है। एंड व्हाट हैपेंड वाज, हम शायद इसमें लकी थे कि अनलाइक अदर ब्रांड्स जो सिर्फ पर्सनल केयर में है, ठीक है, हम शुरू से आयुर्वेद में हैं, और हमारा वी फेल इनटू एसेंशियल कैटेगरी बेसिकली। एंड एसेंशियल कैटेगरी की वजह से हमारे को वो छूट मिल गई शिपिंग करने के लिए, आफ्टर अप्रैल 2020, कि जहां पर हम अपने प्रोडक्ट्स शिप कर सकते थे अब। ठीक है, हमारे पास वो एसेंशियल कैटेगरी वाला, मतलब वी आर ब्रांड केम अंडर एसेंशियल कैटेगरीज। नाउ व्हाट हैपेंड वाज हियर कि व्हेन वी स्टार्टेड सॉर्ट ऑफ शिपिंग आवर प्रोडक्ट्स, हमने एक अलग ट्रेंड देखा कि 2020 तक जो कि मतलब मैक्सिमम पीपल वर बाइंग आवर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूटेड टू ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर रेवेन्यू, एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बहुत कम था। एंड आफ्टर पैंडेमिक, all thanks to all the people around, people started talking about Ayurveda was becoming a national thing because our prime minister was talking about it. And actually, not just that, but in general, there were a lot of things going on that for COVID you can do this basic recipe, you can make this in your kitchen. People were understanding now the value of the ingredients that they have in their kitchens. ठीक है, साइंटिफिकली प्रूवन था नहीं था, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब यू कैन नॉट प्रूव। आई मीन 100 years बैक आप प्लेन में उड़ना साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते थे, आज हम उड़ रहे हैं, राइट? तो बहुत सारी चीजें थी जो कि लोग ट्राई कर रहे थे। इंडियन हाउस होल्ड्स में लोग अपने खुद के काढ़े बना रहे थे, रेसिपीज बना रहे थे, गिलोय जूस पी रहे थे। उनको समझ आया, अच्छा ये तुलसी जो उगती है और जो गिलोय जो उगता है, इसको भी मैं काट के मैं और इंडियन हाउस होल्ड्स होते हैं, आई थिंक हम वैसे भी बहुत रिच होते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स में, हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं उसमें। तो लोगों की जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लग गई आयुर्वेदा के प्रति, बूस्टेड बाय आर द होल नेशनल मार्केटिंग कैंपेन, हमारा वेलनेस प्रोडक्ट्स का जो खरीदने का लोगों का था वो ज्यादा बढ़ने लग गया। और हमारे वेलनेस प्रोडक्ट्स का जब बढ़ने लगा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, तो हमने एक ट्रेंड देखा कि पर्सनल केयर लोग आज जैसे एक बार खरीदते हैं तो शायद उनका रिपीट रेट अगले 6 महीने में हो, ठीक है, या अगले 4 महीने में हो, वेर एज वेलनेस प्रोडक्ट्स का रिपीट रेट थोड़ा ज्यादा अच्छा था। तो हमें ये समझ आने लगा, अब जब तक हम पर्सनल केयर पे ज्यादा अपना एडवर्टीजमेंट खर्च कर रहे थे, अब हमने सेम चीज हेल्थ केयर पे भी उतना ही इक्वल अमाउंट देने लग गए। और यहाँ पर हमारा जो हम फेसबुक और गूगल की भाषा में उसको ROS बोलते हैं, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, और वो हमारा रिटर्न ऑन एड स्पेंड हमें वेलनेस से ज्यादा दिखने लगा। हमें समझ आया कि हम जितना, अगर हम 100 रुपए डाल रहे हैं वेलनेस में, तो हमारे 600 या 800 रुपए निकल के भी आ रहे हैं कई बार। और पर्सनल केयर में क्योंकि कंपटीशन इतना था सब कुछ, और लोगों की कोई लॉयल्टी नहीं होती है, क्योंकि पर्सनल केयर में लोग कितना ही वो प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करके मेडिसिनल इफेक्ट्स देख सकते हैं, नहीं देख सकते। ठीक है, वेरएस जब वो वेलनेस में शिफ्ट हुए तो उनको समझ आया, यार
इन लोग के प्रोडक्ट्स हमारे लिए काम कर रहे हैं, और उसमें आप बेनिफिट्स देखते हो कि आपके शरीर को ये बेनिफिट हुआ, आपके बालों को ये बेनिफिट हुआ, आपकी स्किन को ये बेनिफिट हुआ, तो लोग दे स्टिक बाय इट बेसिकली। एंड तो हमारा कोविड का जर्नी बेसिकली यही रहा कि हमारा एक अंडरस्टैंडिंग हुआ, लोगों का अंडरस्टैंडिंग आयुर्वेदा के प्रति बढ़ा, और हमने अपने जब वेलनेस प्रोडक्ट्स को मार्केट करना स्टार्ट किया, तो उससे जो रेवेन्यू शेयर आना स्टार्ट हुआ, उस पर हमें कम खर्चा करना पड़ा, और आई थिंक हमारी जो ग्रोथ हुई उसी की वजह से हुई। ओके, इट्स वाज अ रियली ग्रेट एंड इंस्पायरिंग स्टोरी। पैंडेमिक के टाइम कैसे आपका ट्रेंड पर्सनल से वेलनेस की तरफ शिफ्ट हुआ एंड पूरा ग्रोथ उसी से बढ़ा है। मेरा और एक सवाल था कि कहते हैं कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को हमेशा अलग अलग रखना चाहिए, मगर आप लोगों की पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ फैमिली बिजनेस की वजह से एक ही है, तो आप इसे मैनेज कैसे करते हैं? क्या ऐसा होता है कि बिजनेस की बातें डिनर टेबल पे आ रही है या बिजनेस का टेंशन घर पे आ रहा है, आप लोग इसे मतलब प्रॉपरली मैनेज कैसे करते हैं? अच्छा ठीक है, मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, फिर स्तुति का पर्सपेक्टिव। मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप एक बिजनेस फैमिली में पैदा होते हो, या कन्वेंशनल उसमें बोलो तो बनिया फैमिली में पैदा होते हो, तो आप जब ग्रो कर रहे होते हो, तो भी आप ये सारे शब्द बचपन से ही सुनते आ रहे होते हो, जैसे कि मार्केट शेयर क्या चल रहा है, मार्केट का भी वैल्यू क्या है, स्टॉक मार्केट टूट गया है, ये इंडस्ट्री अभी परफॉर्म नहीं कर रही है, तो इससे ये इम्पैक्ट हो सकता है। तो वो एक आपका जो आपका डिनर टेबल पे जो बातें होती हैं, वो कहीं ना कहीं, इवन दो आपको, क्योंकि हम दोनों बहुत, हमने बिजनेस की पढ़ाई नहीं की है, हम दोनों ने बहुत ही डिफरेंट कोर्स चूज किए थे इसी कारण से, कि शायद हमको जब बिजनेस करना होगा हम करेंगे, बट हमें आर्टिस्टिक और डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज चूज करने हैं, क्योंकि हमारी पढ़ाई डिफरेंट होनी चाहिए। तो हमारे, आई थिंक जैसे बोलते हैं ना कि बिजनेस खून में रहता है, तो वो हम, बिकॉज बचपन से, आई थिंक जब से मुझे याद है, 5 6 7 साल से, और मतलब एटलीस्ट मेरी पापा के साथ जो कॉन्वर्जेशन हुई है, उसमें आई थिंक 20 to 30% टाइम्स जो मुझे शायद समझ भी नहीं आ रही हो, लेकिन वो दो लोग जो बात कर रहे हैं, जैसे पापा या उनके कलीग्स बात कर रहे हैं, या फैमिली मेंबर्स, पापा चाचा बात कर रहे हैं, पापा ताऊ बात कर रहे हैं, जो भी है ना, तो भी एक बिजनेस की ही बात, जो टर्मिनोलॉजीज है, वो बिजनेस की बात चल रही है। ठीक है, तो वो हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत बचपन से बिल्ड होने लगती है, कि अच्छा, ये हो रहा है इसलिए ये हो रहा है, मतलब कि कैसे पॉलिटिकल डिसीजन इकोनॉमिकल डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं, कैसे इकोनॉमिकल डिसीजन एक सोशियोलॉजिकल डिसीजंस को इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो हाउ एवरीथिंग इज लिंक्ड। एंड एज बिजनेस पर्सन, यू नीड टू बी वेरी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। तो वो हमें जो सीख है वो बचपन से मिलती है। तो uh, अब अमृतम पे आते हैं। ठीक है, तो बिजनेस की बातें तो शुरू से हुई है। ठीक है, भले ही खुद के बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट को लेके ना हो, लेकिन बिजनेस की बातें और बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज, हम हमारा बिजनेस स्कूल हमारा घर ही था। ठीक है, जब अमृतम में हम काम करते हैं, सही बात है, जब मतलब पापा मम्मी भाई बहन पूरी फैमिली एक बिजनेस में काम करती है, तो कहीं ना कहीं वो पर्सनल स्पेस खत्म हो जाता है। आ, वो पर्सनल स्पेस, मतलब जहाँ पे हम एक इमोशनल बातें कर सकते थे, या एक पर्टिकुलर चीज, वो शायद कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। बट मुझे लगता है कि मतलब इक्वली, उसके इक्वल प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो मैं अभी भी आई एम मेजरिंग इट, आई एम गेजिंग इट, कि इन द लॉन्ग रन क्या अच्छा होता है। बट एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि बड़े से बड़े बिजनेस, बड़े से बड़े एम्पायर्स जो खड़े हुए हैं, वो ट्रस्ट और रिलायबिलिटी से खड़े होते हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि बिजनेस अगर आप घर वालों के साथ साथ कर रहे हो, जिनको आपने बचपन से ग्रो होते हुए देखा है, आप उनके साथ पले बड़े हो, तो वो जो ट्रस्ट होता है, इसीलिए शुरू के अगर आप बिजनेसेस देखेंगे, तो वो दो दो भाई साथ में काम कर रहे हैं, चार भाई साथ में काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी आप स्टोरी देखने चाहे डाबर, बैद्यनाथ, या आयुर्वेद में बता रहा हूँ हल्दीराम्स। ठीक है, ये सारे बड़े फैमिली बिजनेस थे, जो इतने सदियों में, इतने टाइम में बड़े बने, क्योंकि ट्रस्ट था कहीं ना कहीं, कि हाँ यार मतलब, और किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। हाँ, उसका नेगेटिव ये होता है कि जो आपका एक इमोशनल कनेक्शन है, ठीक है, या जो एक इमोशनल स्पेस है, कनेक्शन तो नहीं कहूंगा क्योंकि कनेक्शन तो हमेशा रहेगा,
बट जो एक इमोशनल स्पेस है कम्युनिकेट करने का, वो खत्म हो जाता है कि हर चीज घूम फिर के बिजनेस की बातों पे ही आ जाती है, जो कि कई बार इरिटेटिंग हो सकती है। आप स्तुति का टेक। um so actually it's like ki since four of us work at Amrutam, and also because हम लोग अपनी कम्युनिटी को भी अमृतम फैमिली बोलते हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल में भी पर्सनल हो जाता है और पर्सनल में भी प्रोफेशनल हो जाता है. बट आई थिंक आवर मदर इज very very how do I say, a person with very high emotional intelligence, and she somehow knows how to create boundaries with respect to, okay, when we will talk about work and when we'll talk about our lives and our what's happening in our personal life. So her, and now that Agnim is married, so his wife, both of them sort of bring three of us back, like our father and two of us back from ki अब बहुत हो गई काम की बात है, अभी थोड़ा नॉर्मल उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए आई थिंक वो सेपरेट देखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. मतलब I don't think we're the right people to even answer how to manage personal and professional. Maybe our mother is. Maybe she can answer that for you guys, but I don't think we are. We do have some overlapping conversations where and see that that's the beauty of it, because it's not like if we are having a business meeting, and if it's like us, there are aspects to a personal life which could also slip in. So it's not like physical, like very demarcated structures with respect to when we're talking about work and when we're talking about personal life. But overall, yes, it's the 80-20 thing, that 20% is only when we're talking about our personal life, but the rest of the time it's majorly work, because we're all very passionate about it. And since in a 24-hour like day, if we are sleeping for 7-8 hours, and if we are working for 8 to 10 hours, we are awake is the time when we are actually working. So that is majorly what we anyway have to talk about. But I think we are still in a phase where we are learning how to manage it, I guess. ओके। और मुझे तो लगता है कि आप लोगों की पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ एक काफी जुड़ी है, इसी की वजह से अमृतम भी एक फैमिली की तरह है। उसमें भी एक पर्सनल टच काफी ज्यादा शायद इसी वजह से आया, बिकॉज एक फैमिली उसे रन कर रही है। मेरा और एक सवाल था आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के लिए। कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स स्मॉल स्केल क्लिनिक लेवल पे अपने प्राइवेट पेशेंट्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो अगर उन्हें उसे लार्ज स्केल पर ले जाना हो तो आप उन्हें कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे? So I feel that a lot of Ayurvedic doctors have come up with great formulations that they have created and have actually created an impact in their patient's life because of the formulations. But problem कहाँ आती है कि जो प्रोडक्ट बंदा होता है वो शायद बेचना नहीं जानता है, जो बेचना जानता है वो शायद प्रोडक्ट बनाना नहीं जानता, जो जो एक्चुअली मतलब जो ऑपरेशंस में बहुत अच्छा है वो शायद मार्केटिंग में अच्छा नहीं है, जो प्रोडक्ट में अच्छा है वो शायद ऑपरेशंस में अच्छा नहीं है. तो ये तो एक जनरल वो है, मतलब एक, हाउ डू आई से, लाइक दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यू नो. It is foolish to think that you can do everything. But what they can do is find right partners who would be willing to give them a platform or a stage where their formulation can actually reach out to a large audience. See, that's the thing, right? Like our father is a very, very like hardcore product guy. He knows his products, he knows his ingredients, to the detail. Like, but it was two of us who understood, since we are
in a way detached, so we could understand that who's going to value these products. We were not associating too much of our self-esteem with how the products will sell and which one will sell. But for an artist, selling its own art becomes very tough. But because they're emotional about it, they're attached to it, and they would take even the slightest rejection, the smallest review to the heart. While um, someone who's like someone who manages an art gallery, or someone who deals and collects art paintings and sells it, they are very rational about it. And similar, like it's the same thing, that if an ayurvedic doctor is manufacturing a product, or let's say medicine or a formulation for his or her own patients which are working for them, then you identify, okay, who can amplify my product, rather than get into the marketing on its own. Because since it's like asking a fish to climb a tree, or asking a monkey to swim in the river. They're not designed for that. So if a fish is not able to climb a tree, doesn't mean it's worthless. It's just not meant for it. And understanding what your skill set is will actually uplift your self-worth. And I can say that since I am a clinical psychologist by profession, I feel that we all in general are trying to fit ourselves in someone else's box, and when we do not fit in it, we feel like we are not good enough. This is on an individual level, this is on a country level, where our Indian culture do not fit this western box, or our Ayurvedic heritage does not fit a modern science lens. And that's why we feel like, okay, if we cannot prove it, we're not good enough. Yeah. So it's that, like, that's my advice, that you identify what is your skill set, and find the partners that you need to fulfill your vision, to fulfill, if you want to sell your products on a larger scale. मैम, आपको क्या लगता है कि आयुर्वेद में जितना पोटेंशियल है उतना आज बिजनेस में आ नहीं पाया, तो क्या आयुर्वेद को लोगों को बिजनेस नॉलेज गेन करने की जरूरत है? क्या आयुर्वेद जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको बिजनेस की नॉलेज की जरूरत नॉलेज है? की जरूरत है, या जो आयुर्वेद I की don't think है? so. I don't think so. See, that's what I'm saying, na, कि Ayurveda, yoga, Hinduism, all of these are such complex. They're like human body. हमारे पास कोई हम इसीलिए स्केल नहीं कर पाते, क्योंकि as simple as like uh, I mean, if we look at Christianity or Islam, there's one God, there's one structure, there's two festivals, there's like a very very standardized way. But हमारे यहाँ पे साल भर चली जा रही हैं चीजें, किसी को कुछ फॉलो करना है, किसी को कुछ फॉलो करना है, फिर उसके बाद जोग्राफिकली भी हम डिफर कर जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें, मतलब सबने अपने तरीके से अडेप्ट किया, क्योंकि दैट्स हाउ ह्यूमन बॉडी आल्सो फंक्शंस, दैट्स हाउ ह्यूमन माइंड आल्सो फंक्शंस. नॉट एवरीथिंग इज गोइंग टू सूट एवरीवन, right? If all of us today listen to one single song, what emotions it provokes in each of us is so complex to generalize. And that's how Ayurveda is also functioning, right? कि अगर तो अगर हम, मतलब योर क्वेश्चन कि क्या आयुर्वेद जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको बिजनेस की सेंस होना जरूरत है? नहीं, नॉट नेसेसरीली. बट जो बिजनेस कर रहे हैं उनको उस चीज की वैल्यू करने की जरूरत है. We are a ecosystem, right? Like, we live in a society for a reason, so that each individual does something which impacts someone else's life. Currently, if this electricity is running, or if I'm getting water in my tap, I'm not waking up in the morning trying to figure out कि electricity कैसे आएगी और पानी कैसे आएगा. Correct? We are relying on each other, and similarly, if Ayurveda also has to grow, we need to rely on the fact that, okay,
you know and you understand the subject knowledge, and I understand how to amplify and reach out to the audience who will value it. Yeah, true. Right, ma'am. Very well said. एक लास्ट क्वेश्चन, अमृतम के सक्सेस के 3 की फैक्टर्स आप अगर आप बताना चाहेंगे तो? 3 factors. I think we are guided by family, faith and future. तो वही 3 फैक्टर्स है हमारे. हमारी वैल्यूज बहुत फैमिली से जुड़ी हैं, तो हम कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं जिसको हम अमृतम फैमिली बोलते हैं. We are guided by faith, so when we the idea is to give our best in every single thing we do and then leave it on faith. अमृतम में हम एट एनी गिवन टाइम 10 प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, जिसमें से एक चल जाता है और 9 नहीं चलते हैं. एक दिखता है, वो 9 दिखते नहीं है, क्योंकि हम मेहनत 10 पे कर रहे होते हैं. और वो ऑब्वियसली वी ऑल्सो हैव फेथ कि हाँ, जो चलना होगा वो चलेगा. हमने 10 बीज लगाए हैं, कौन सा पेड़ उगेगा वो हमारे हाथ में नहीं है, कौन सा पेड़ फ्रूट्स देगा वो भी हमारे हाथ में नहीं है. तो वो faith is the second key factor. And third is future, since Agnim is extremely passionate about, futuristic innovations and technology. We do a lot as a brand, which is driven by what's going to happen next. And even though we are bootstrapped, even though we are not heavily funded even by ourselves, we have been able to make a mark and stand out. It's because we are constantly thinking ahead of our time and trying to bring in innovations, projects, features, functionalities, little things that add value. Like when we start working on something today, it only makes sense maybe 2 years, 3 years later. Sometimes it takes 5 years. But the idea is that we are with the change. So as much as Ayurveda is historical, ancient science, our brand is extremely future driven. राइट. मैम, आपने इतनी फ्यूचर की बातें की. अब मेरा एक आखिरी सवाल, अमृतम के फ्यूचर प्लान्स क्या है? मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि अमृतम इतना आगे का सोचता है कि इन्होंने एल्युमिनियम बॉटल पैकेजिंग और रिफिल के कंसेप्ट्स भी निकाले हैं. सो आई एम रियली एक्साइटेड टू नो कि अमृतम के आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है. You go ahead. अच्छा, फ्यूचर प्लान्स बेसिकली हमारा बहुत टाइम से मन था, जैसा आपने कहा कि आयुर्वेद जो डॉक्टर्स हैं उनको कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है. उनका इतना जो पढ़ाई है, जो उनकी रिसर्च है, प्रोडक्ट नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पा रही है. तो हमारा हमेशा से एक सपना था, जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो कम्युनिटी हम इस हिसाब से बनाना चाहते हैं कि जहां पर हम वो इकोसिस्टम क्रिएट कर पाए, जो कि सबको, इकोसिस्टम का जो भी पार्ट है उसको हेल्प करे. तो जिस हिसाब से हमारे प्रोडक्ट्स ने डिफरेंट तरीके का इम्पैक्ट किया है, हमारा बहुत टाइम से मन था कि हम सर्विसेज में जाएं और आयुर्वेद जो डॉक्टर्स हैं उनको कनेक्ट करें अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू कंज्यूमर्स के साथ. क्योंकि अब जैसे जैसे लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है आयुर्वेद पे और अमृतम पे, बहुत सारे हमारे कंज्यूमर्स हैं, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, जो आते हैं हमारे पास और वो कहते हैं कि क्या हम आपके अमृतम के एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं. और इसी के तहत हमने 2019 में एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसका नाम हमने रखा amrutam.global. ये एक टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म था जहां हमने 10 आयुर्वेदा एक्सपर्ट लिस्ट किए, जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के उसमें एक्सपर्ट्स थे. और हमारे कंज्यूमर्स को हमने अपने कंसल्टेशंस के लिए आयुर्वेद डॉक्टर से कनेक्ट कराया. अब जो हमारा नेक्स्ट फ्यूचर प्लान है, प्रोडक्ट्स तो हमें ग्रो करने ही है, वो उनका एक अपना ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, उनका ग्रोथ पाथ है. हम रिसेंटली सितंबर 2021 से हम मार्केट प्लेसेस पे भी लिस्ट हुए हैं. यूएस एफडीए का हमें सर्टिफिकेशन मिला है. हम amazon.com पे बेच रहे हैं यूएसए में. और थोड़ा थोड़ा मतलब जहां पर भी हम फैला सकते हैं अपने आप को, वो तो फैलाना ही प्रोडक्ट लेवल पे. बट हमें सर्विसेज, हमारा एक वन ऑफ द फोकस है जो नेक्स्ट है.
जहाँ पर हम एक ऐप बना रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जो कि कॉमर्स तो जहाँ होगा ही, प्रोडक्ट्स तो बेचेंगे ही, बट आयुर्वेदा डॉक्टर्स का नेटवर्क ऑफ आयुर्वेदा डॉक्टर्स होगा वहाँ पे, जहाँ पर आप अपना खुद का ही कंटेंट क्रिएट करेंगे, खुद का ही ऑडियंस बिल्ड करेंगे, और उन ऑडियंस को आप टेक्स्ट कंसल्टेशन एंड वीडियो कंसल्टेशंस के माध्यम से यू वुड बी प्रोवाइडिंग देम द कंसल्टेशंस। सो ये हमारा एक नेक्स्ट फ्यूचर प्रोजेक्ट है, जिस पे हम काम चल रहा है, अभी भी चल रहा है। और 2 साल 3 साल से तो हम उसको पायलट प्रोजेक्ट पे चला रहे थे। अब जब हमने दिसंबर 2021 में उस पर और फोकस किया, तो हमने फिर एक पूरा टेक पे इन्वेस्ट किया, और एक टीम है जो कि सब कुछ बिल्ड कर रही है। थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन हमारा मकसद ये है कि अगर हम जब आयुर्वेदा की बात करें, या फिर कोई भी आयुर्वेदा की बात करें, और लोग बोले कि मॉडर्न आयुर्वेदा को किसने चेंज किया, तो हम चाहते हैं कि अमृतम का नाम आए। Wow. हाँ। That's great. I'm really excited to see कि अमृतम की जर्नी आगे की कैसे रहती है, एंड आई एम श्योर मॉडर्न आयुर्वेदा में अमृतम का नाम जरूर आएगा, और वो आ ही रहा है अभी से, और वो और आगे बढ़ने वाला है। थैंक यू सो मच, आप लोग अपना वक्त निकाल के आए, हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर की। इट वॉज ट्रूली अ पावर पैक सेशन, एंड आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस को अमृतम से और आप दोनों की जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू सो मच, हमें थैंक भी यू। बहुत मजा आया आपसे बात करके। यस।